हेलो फ्रेंड्स, जहाँ से हमने फर्स्ट वीडियो कट किया था वहीं से हम अपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेयर वी वर देयर की वेयर देयर इज एन अनसर्टेनिटी as far as revenue recognition is concerned, so we have to postpone the revenue recognition till the time the revenue is certain and not before that at all. So where the ability to ultimately collect is vague or is doubtful, then the revenue has not to be recognized until unless it is very much certain. When the uncertainty relating to collect ability arises subsequent to the time of sale or the rendering of service, it is more appropriate to make a separate provision to reflect the uncertainty rather than to adjust the amount of revenue originally recorded. Number 9. An essential criterion for the recognition of revenue is that the consideration receivable for the sale of goods, the rendering of services, is reasonably determinable. बहुत ज़रूरी है कि वो reasonably determinable होना चाहिए monetary terms में, तभी आप revenue recognize कर पाएंगे, otherwise हम सब कैसे करेंगे? If that is not measurable, if that is not determinable, when such consideration is not determinable within reasonable limits, the recognition of revenue is postponed. When recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties, it is considered as the revenue of the period in which it is properly recognized. Main principles. अब हम आते हैं कुछ मेन प्रिंसिपल्स के बारे में. मेन प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि रेवेन्यू को किस तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए. अगर मैं बात करूँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक्साइज ड्यूटी पे होती है, तो हमेशा एक्साइज ड्यूटी को ग्रॉस टर्नओवर में से सेपरेटली डिडक्ट करके हम शो करते हैं. दैट इज द ग्रॉस टर्नओवर लेस एक्साइज ड्यूटी एंड देन वी गेट द नेट टर्नओवर, द टर्नओवर नेट. The amount of excise duty to be deducted from the turnover should be the total excise duty for the year, except the excise duty related to the difference between the closing stock and the opening stock. The excise duty related to the difference between the closing stock and opening stock should be recognized separately in the statement of profit and loss, with an explanatory note in the notes to accounts to explain the nature of the two amounts of the excise duty. In a transaction involving the sale of goods, the performance should be regarded as being achieved when the following conditions have been fulfilled. ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है. हम बात करें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की which we have to follow while recognizing the revenue. So, सेल ऑफ गुड्स के केस में हम परफॉर्मेंस को तभी अचीव मानेंगे when the seller has transferred to buyer the property in goods or all the significant risk and rewards, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी. And second, no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of goods. कोई भी सर्टेनिटी, कोई भी तरह का शक या सवाल नहीं होना चाहिए कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. It should not be uncertain at all. Then the next principle is जहाँ पे in the transaction involving the rendering of services, the performance should be measured either under the completed service contract method or the proportionate service contract method, which relates the revenue to the work accomplished. Such performance should be regarded as being achieved when no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration. वही बाकी कोई uncertainty नहीं होनी चाहिए regarding the collection of the revenue. Revenue arising from the use by others, yielding interest, royalties, and dividend should only be recognized when no significant uncertainty as to measurability of the collectibility exists. Disclosure. Principles तो आ गए, methods of recognizing revenue for services भी आ गई. अब बात करते हैं डिस्क्लोजर की, जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करनी पड़ती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, statement of changes in equity, and notes to accounts. These are the 5 general things which comprises and make the financial statement. In addition to the disclosures required by Accounting Standard 1 on disclosure of accounting policies, an enterprise should also disclose the circumstances in which the revenue recognition has been postponed pending the resolution of significant uncertainties. हमें वो circumstances भी disclose करने हैं जिस
उसकी वजह से हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने से पोस्टपोन कर दिया है. यू हैव टू क्लियरली एक्सप्लेन एज टू व्हाई वी हैव डिफर्ड द और व्हाई वी हैव पोस्टपोन्ड द रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू वेरी मच क्लियरली इन द नोट्स टू अकाउंट्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इलस्ट्रेशंस. अब हम बात करते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस की कि जिसको हम कैसे डील करेंगे. तो पहले हम इलस्ट्रेशंस जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कुछ सेल ऑफ गुड्स के बारे में, जैसे कि क्लैरिफाई हो जाएगी काफी डाउट्स और काफी चीजें अपने आप में. जब इस तरह के कोई पर्टिकुलर केसेस आपके सामने आए तो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि इसको कैसे डील करना है. देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड इज मेड. पहला, डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट एंड बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट्स द बिलिंग. डिलीवरी आपने बायर के कहने पे रोक दी क्योंकि बायर ने कहा कि मुझे अभी डिलीवरी नहीं चाहिए, लेकिन बायर ने ओनरशिप ले ली और बायर ने बिलिंग भी एक्सेप्ट कर ली, यानी कि बायर ने पेमेंट भी कर दी, लेकिन डिलीवरी इन पोजेशन नहीं गया. रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट फिजिकल डिलीवरी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड. सो माय क्वेश्चन हियर इज द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड? आंसर इज yes. Is the significant risk and reward transfer? The answer is yes. Is the possession transferred? The answer is no. But that is not any criteria for recognizing the revenue. ये तो recognizing के लिए criteria है ही नहीं. Recognition के लिए main criteria है कि the property in good should be transferred, significant risk and reward should be transferred, and there should not be any uncertainty regarding the collection. So has the customer accepted billing? Yes, he has accepted the billing. So there is no doubt as to why you should not recognize the revenue. You should recognize the revenue notwithstanding the fact that the physical delivery has not been completed, so long as there is every expectation that the delivery will be made. दूसरा, delivered subject to conditions. Installation and inspection, that is goods are sold subject to installation inspection. Goods तो बेच दिए लेकिन installation होना बाकी है, inspection होना बाकी. ऐसे केस में क्या करें? Revenue should normally not be recognized until the customer accepts the delivery. जब तक कि कस्टमर डिलीवरी को एक्सेप्ट ना कर ले. एंड इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन आर कंप्लीट. जब तक कि इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन जनरली कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि जब तक इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन नहीं होगी हो सकता है कि कस्टमर कुछ डिफेक्ट आ जाए तो कस्टमर वो चीज ले ही ना. तो until unless that entire process happens, you should not recognize the revenue. In some cases, however, the installation process may be so simple in nature that it may be appropriate to recognize the sale, notwithstanding that installation is not complete. For example, sale of tally. आपने tally बेच दी, क्विक बुक बेच दी या एंटीवायरस बेच दिया, तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही कंप्लीट है. इसके केस में आपको इंस्टॉलेशन की वजह से यू वांट डेफर और पोस्टपोन द रेवेन्यू रिकग्निशन. बी ऑन अप्रूवल. डिलीवरी है ऑन अप्रूवल. Revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer or the buyer has done an act adopting the transaction or the time period for rejection has elapsed. तीसरा, guaranteed sales, that is delivery is made giving the buyer an unlimited right of return. The recognition of revenue in such circumstances will depend on the substance of the agreement. In the case of retail sales, offering a guarantee of money back if not completely satisfied, it may be appropriate to recognize the sale but to make a suitable provision for returns based on previous experience. बात करते हैं consignment sales. That is, say a delivery is made whereby the recipient undertakes to sell the goods on the behalf of the consignor. In that case, the revenue should not be recognized until the goods are sold to a third party. जब तक कि अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स ना बेच जाए, आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना. कैश ऑन डिलीवरी सेल्स. रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड अंटिल कैश इज रिसीव्ड. जहां पे कैश सेल्स हो रही है, जब तक कैश ही आप रिसीव ना कर लो तब तक आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना. अब हम बात करते हैं स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट्स. कुछ स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं, शिपमेंट्स होती हैं जहां की पेमेंट इज रिसीव फॉर गुड्स नॉट प्रेजेंटली हेल्ड इन स्टॉक. दैट इज द स्टॉक इज स्टिल टू बी मैन्युफैक्चर्ड. स्टॉक को अभी भी मैन्युफैक्चर करना बाकी है या डिलीवरी देनी बाकी है. Revenue from such sales should not be recognized until goods are manufactured, identified and ready for delivery. जब तक कि गुड्स मैन्युफैक्चर ना हो जाए, जब तक गुड्स ही नहीं बने, तो आप कैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज करने की सोच भी सकते हैं. पहले जब तक मैन्युफैक्चरिंग ना हो जाए, आइडेंटिफाई नहीं हो जाए और रेडी फॉर डिलीवरी नहीं हो जाए, तब तक रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होगा. सेल और रीपर्चेज अग्रीमेंट्स, दैट इज where seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date. Seller has agreed, but he has said at a later date कि
बाद में कभी on XYZ date he will purchase the goods. For such transactions, the resulting cash inflow is not revenue as defined and should not be recognized as revenue. Sales to इंटरमीडिएट पार्टीज, जहाँ पे आप अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल नहीं कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट को सेल कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहे हैं या डीलर को सेल कर रहे हैं फॉर रीसेल. Revenue from such sales can generally be recognized if significant risk of ownership has been passed. However, in some situations, the buyer may in substance be an agent, and in such cases, the shares should be treated as consignment sale. Next point: subscriptions for publications. जहाँ पे subscriptions होती हैं, revenue received or billed should be deferred and recognized either on a straight line basis, over time, or where the items delivered vary in value from period to period. Revenue should be based on the sales value of the item delivered in relation to the total sales value of the items covered by the subscription. Installment sales, where the consideration is receivable in installments, the revenue attributable to the sale price exclusive of interest should be recognized at the date of sale. The interest element should be recognized as revenue proportionately to the unpaid balance due to the seller. Trade discounts and volume rebates. Trade discounts and volume rebates received are not encompassed within the definition of revenue, since they represent a reduction of the cost. Trade discounts and volume rebates given should be deducted in determining the revenue. So this was certain illustrations as to in such cases what and when will you recognize the revenue. Next, let's come to rendering of services. Services के केस में क्या special cases हो सकते हैं? First, installation fees. In cases where the installation fees are other than incidental to the sale of the product, they should be recognized as revenue only when the equipment is installed and accepted by the customer. Second, advertising and insurance agency commissions. Revenue should be recognized when the service is completed. When the service is completed. Okay, for advertising agencies, media commissions will normally be recognized when the related advertisement appears before the public and the necessary invitation is received by the agency, as opposed to production commission, which will be recognized when the project is completed. Third, financial service commissions. Financial service के commissions को कब recognize करना है? A financial service may be rendered as a single act or may be provided over a period of time. Similarly, charges for such services may be made as a single amount or in stages over a period of time on the service of life or transaction to which it relates. Such charges may be settled in full when made or added to a loan or other account or settled in stages. The revenue should therefore have regard to whether the service have been provided once and for all and or is on a continuing basis. Number 1, क्या सर्विस एक ही बार में दी जाने वाली सर्विस है या ये एक कॉन्टिन्यूइंग सर्विस है? ये क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट. सेकेंड, द इंसिडेंस ऑफ द कॉस्ट रिलेटिंग टू द सर्विस. थर्ड, व्हेन द पेमेंट फॉर द सर्विस विल बी रिसीव्ड. कब पेमेंट रिसीव होगी इज द थर्ड मेन क्राइटेरिया. In general, the commissions charged for arranging or granting the loan should be recognized when a binding obligation has been entered into. Fourth, admission fees. Admission fees जहाँ पे मिलती है, जैसे कि artistic performances होते हैं तो आप टिकट्स खरीद लेते हैं, बैंकेट हॉल्स और स्पेशल इवेंट्स की चीजें होती हैं जब इवेंट टेक्स प्लेस करता है. When a subscription to a number of events is sold, the fee should be allocated to each event. Fees should be allocated to each event on a systematic and a rational basis. Tuition fee. Revenue should be recognized over the period of instruction. Entrance and membership fees. Entrance and membership fees. Revenue recognition from these sources will depend on the nature of the services being provided. Entrance fee received is generally capitalized. Entrance fee को हम generally capitalize करते हैं. If the membership fee permits only membership and all other services are paid separately, or if there is a separate annual subscription, the fee should be recognized when received.
If the membership fee entitles a member to services or publications to be provided during the year, it should be recognized on a systematic and a rational basis, having regard to the timing and the nature of all services. So friends, this was the accounting for revenue recognition in detail and in a very simple layman concept, which will allow you to how to recognize the revenue. You should have a broader principles and few fundas in mind. That is, let me sum up this particular accounting standard for you. So if I talk about this accounting standard, I need to sum up few things. First, there is sale of goods or the rendering of services or the use by others. आपने गुड्स बेच दिया या सर्विसेज दे दी या फिर आपने किसी को यूज करने दे दिया, जिसके केस में या तो इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगी या डिविडेंड आएगा। गुड्स के सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। सर्विसेज के केस में देयर आर टू मेथड्स, proportionate completion method and completed service contract method, and we have read certain illustrations as to when the revenue has to be recognized. Number 2, principles. सबसे important principle जो कि revenue recognition के लिए important है, that the revenue should be measurable. There should not be no uncertainty regarding the collection of the cash or the receivables. If I define the revenue as per the accounting standard, the revenue is the gross inflow of cash or receivables. या तो कैश आएगा या क्रेडिट सेल्स आएगा या फिर कोई भी तरह की कंसिडरेशन और एनी अदर कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज बाय अदर्स, yielding इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स. सो प्रिंसिपल, significant risk and reward should have been transferred. There should not be any uncertainty regarding the collection. Number 2. So this is how we have to recognize, and there are no other methods of recognizing revenue, either completed or the proportionate completion method based on the either the value of the contracts or the number of determinable acts. So this was the accounting standard for revenue recognition to you. In my next topic, I will be discussing about another accounting standard for you. So if you have any questions regarding this particular accounting standard, you feel free to ask on my YouTube channel. Till then, thank you friends.